1. Assault, verb. हमला, चढ़ाई, जिना बिलजब. Make a physical attack on. 2. Envoy, noun. कासिद, सफीर, एलची. A messenger or representative, especially one on a diplomatic mission. 3. Malicious, adjective. हासिद, दिल का बुरा. Characterized by malice, intending or intended to do harm. 4. Distrust, verb. अदम एतमाद, बदएतमादी, बदगुमानी करना. Doubt the honesty or reliability of, regard with suspicion. 5. Perpetrator. जुर्म करने वाला इर्तिकाब करना. A person who carries out a harmful, illegal, or immoral act. 6. Assailant, noun. हमला आवर, जारे. A person who physically attacks another. 7. Envoy, noun. कासिद, सफीर, एलची. A messenger or representative, especially one on a diplomatic mission. 8. Storm, verb. तूफान, झक्कर, तेज. Move angrily or forcefully in a specified direction. Example, she burst into tears and stormed off. 9. Tenuous, adjective. कमजोर, पतला, नाजुक. Very weak or slight. 10. Escalation, noun. बढ़ावा, तेजी, शिद्दत बढ़ाना. A rapid increase, a rise. 11. Leverage, noun. कुवत, असर, बीरमी निजाम. The exertion of force by means of a lever. 12. Deliberately, adverb. दानिस्ता तौर पर, जानबूझकर. Consciously and intentionally, on purpose. 13. Sparing, adjective. नर्म दिल, बख्शिश. Moderate, economical. 14. Resurgence, noun. कुवत बख्शी, नई रूह, हयात नौ. An increase or revival after a period of little activity, popularity, or occurrence. 15. Lethal, adjective. मुहलिक, जानलेवा. Very harmful or destructive. 16. Strain, verb. दबाव, तांता. Force, a part of one's body or oneself, to make an unusually great effort. 17. Exacerbated. मर्ज में शिद्दत पैदा करना. To make something that is already bad even worse. 18. Perilous, adjective. खतरनाक, खौफनाक. Full of danger or risk. 19. Nexus, noun, formal. मुख्तलिफ चीज़ों के दरमियान राबतों का एक पेचीदा सिलसिला, इलाका, रिश्ता, ताल्लुक, राबता. A complicated series of connections between different things. Terror nexus in Afghanistan. Zahid Hussain. Dawn Editorial. Published on December 7, 2022. For more videos, subscribe. Dawn Vocabulary with Urdu meaning. The attack on the Pakistan embassy in Kabul last week raises questions about the Taliban administration's capacity and resolve to fight terrorist groups operating from Afghan soil. The shooting that targeted the chargé d'affaires seems to be an extension of the militants' war on the Pakistani state. Although the Islamic State Khorasan, ISK, has reportedly claimed responsibility for the assault, the identity of the attackers remains unverified. In a statement posted on social media, the group confirmed that the Pakistani envoy was the target. A spokesman for the Afghan Taliban administration said the attacker was a citizen of a foreign country and an ISK member. Some foreign malicious circles are behind the attack and the aim was to create distrust between the two brotherly countries, the statement said. But the Taliban officials have not identified the nationality of the perpetrator. The attack was well planned. The assailant seemed well armed and well trained. While the Pakistani envoy narrowly escaped, a Pakistani security official sustained grave injuries.
It was a serious security breach as the attacker managed to enter the embassy premises. The incident highlights the deteriorating security situation in Afghanistan. In another incident the same day, unidentified militants detonated a car bomb and tried to storm the headquarters of Hezb-i Islami, headed by Gulbuddin Hekmatyar, in the Afghan capital. The former Afghan Prime Minister was unhurt. It is not clear whether the two incidents were linked. The attack on the Pakistan embassy has given a dangerous twist to the terrorist threat from Afghanistan. Curiously, the assault on the Pakistani embassy came with the TTPs calling off a tenuous ceasefire with Pakistan. The outlawed militant group based in Afghanistan has intensified its terrorist actions in Pakistan's former tribal regions since then. There has also been a marked escalation in cross-border attacks on Pakistani security forces. The return of the conservative Islamic regime in Afghanistan has emboldened Pakistani militant groups taking shelter in that country. Predictably, the so-called peace negotiations that the Afghan Taliban facilitated have collapsed, with the TTP refusing to lay down their arms. Instead, the group had presented its own conditions that virtually call for a surrender of Pakistan's control over the former tribal regions. It is evident that the Afghan Taliban administration seeks to use the TTP as leverage to put pressure on Pakistan. Besides, it is also apparent that some factions of the TTP are part of the transnational militant group whose origins lie in the Middle East. The two cannot be separated. It seems that the Taliban officials deliberately want to focus on the Islamic State, sparing the TTP that continues to enjoy the administration's support. It may be true that the Taliban are serious about fighting the Islamic State but refuse to recognize the close connection between the TTP and ISK. It is well known that many ISK fighters have come from the ranks of the TTP. Also, some other foreign militant groups with sanctuaries in Afghanistan, such as the Islamic Movement of Uzbekistan, IMU, have forged alliances under the IS banner. It is well known that the first chief of the Islamic State in Afghanistan, Hafiz Saeed, was a former commander of the TTP who had fled to Afghanistan after the militants were driven out of the former tribal regions by the military operation. The Pakistani militant group formed the nucleus of the IS when it emerged on the scene in Afghanistan in 2015. The group has been operating mostly in eastern Afghanistan, where the TTP has taken refuge. After having been driven out of North Waziristan, IMU fighters moved to northern Afghanistan, expanding IS operations, which also caused serious concern to neighboring Iran and the Central Asian states. The emergence of the ISK presented a significant challenge to the Afghan Taliban than fighting the US-led forces. There had not been any major defections to the IS from their ranks, but the very existence of the transnational militant group threatened Afghan Taliban control. Curiously, there has been a marked increase in IS terrorist attacks after the return of Taliban rule. According to an official American report, the ranks of the ISK have swelled exponentially since August last year, bringing the estimated number of fighters to 4,000. Most IS attacks have targeted the minority Shia community. The growing strength of transnational militant groups and foreign fighters gaining space in the country present a serious security threat not only to Afghanistan but also to neighboring countries, mainly Pakistan. A major reason for the resurgence of the terrorist networks are the ideological linkages the Afghan Taliban have had with foreign militant groups like the TTP and IMU. Their connection with transnational terrorist outfits is evident. The Afghan Taliban's support for global terrorists casts huge doubts over their commitment to the international community to not allow any terrorist group to use Afghan soil for its activities. According to a recent UN Security Council report, terrorist groups enjoy greater freedom in Afghanistan than at any time in recent history. The TTP is certainly the most lethal of them with its close ties to Al-Qaeda and ISK. Meanwhile, the latest attack on the Pakistan embassy has given a new and dangerous twist to the terrorist threat emanating from Afghanistan. Such incidents could further strain relations between Islamabad and Kabul.
The increasing number of incidents of cross-border attacks and the Afghan Taliban administration's refusal to take action against the TTP has already affected relations between the two. Interestedly, the firing on the Pakistani embassy took place within days of the visit to Kabul of Hina Rabbani Kar, Pakistan's Minister of State for Foreign Affairs. This was the first official-level contact between the two countries in months. Besides other issues, the Taliban administration's failure to act against the TTP operating from Afghan territory has also been taken up in meetings between the two sides. The daring attack on the embassy has exacerbated an already perilous environment, endangering the lives of Pakistani officials based in Kabul and other Afghan cities. It is imperative that the Afghan Taliban cut off all ties with the TTP and other transnational militant networks if they are sincere about meeting their commitments to the international community. The writer is an author and journalist. Published in Dawn, December 7, 2022. For more videos, subscribe. Dawn Vocabulary with Urdu meaning. गुज़िश्ता हफ्ते काबुल में पाकिस्तानी सफारत खाने पर होने वाले हमले से तालिबान इंतज़ामिया की अफ़गान सरज़मीन से सरगर्म दहशतगर्द गिरोहों से लड़ने की सलाहियत और अज़्म पर सवालात उठते हैं। चार्ज डी अफेयर्स को निशाना बनाने वाली फायरिंग पाकिस्तानी रियासत के खिलाफ अस्करियत पसंदों की जंग की तौसी मालूम होती है। अगरचे दौलत इस्लामिया खरासान अलिफास्की ने मुबैना तौर पर इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की है, लेकिन हमला आवरों की शनाख्त की तस्दीक नहीं हो सकी है। सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक बयान में ग्रुप ने इस बात की तस्दीक की है कि पाकिस्तानी सफीर को निशाना बनाया गया। अफगान तालिबान इंतजामिया के एक तर्जुमान ने बताया कि हमला आवर एक गैर मुल्की मुल्क का शहरी और ISK का रुकन था। बयान में कहा गया है कि इस हमले के पीछे कुछ गैर मुल्की बदनीयती पर मबनी हल्के हैं और उसका मकसद दोनों बिरादर ममालिक के दरमियान अदम एतिमाद पैदा करना था। ताहम तालिबान हुक्काम ने मुजरिम की कौमियत की शनाख्त नहीं की है। यह हमला अच्छी तरह से मंसूबाबंद था। हमला आवर अच्छी तरह से मुसल्लाह और अच्छी तरह से तरबियत याफ्ता लग रहा था। जबकि पाकिस्तानी सफीर बाल बाल बच गए, जबकि एक पाकिस्तानी सिक्योरिटी एहलकार को शदीद चोटें आईं। हमला आवर सफारत खाने के अहाते में दाखिल होने में कामयाब होने के बाद ये सिक्योरिटी की संगीन खिलाफ वर्जी थी। ये वाकया अफगानिस्तान में सलामती की बिगड़ती हुई सूरत हाल को उजागर करता है। ऐसे दिन एक और वाकये विच नामालूम अस्करियत पसंदाहे ने एक कार बम धमाके तो और दत्ताती अफगान दारुल हुकूमत विच गुलबदीन हिकमतयार दी सरबराही विच हिज़्ब इस्लामी दे सदर दफ्तर अति हमला करने दी कोशिश की थी। साबिक अफगान वजीर आज़म को कोई चोट नहीं आई। ये वाज़े नहीं है कि आया इन दोनों वाकयात का आपस में कोई ताल्लुक है या नहीं। पाकिस्तानी सफारत खाने पर हमले ने अफगानिस्तान से दहशतगर्दी के खतरे को खतरनाक मोड़ दिया है। दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तानी सफारत खाने पर हमला TTP की जानिब से पाकिस्तान के साथ जंगबंदी खत्म करने के बाद किया गया। इसके बाद से अफगानिस्तान में कायम कालादम अस्करियत पसंद ग्रुप ने पाकिस्तान के साबिक कबायली इलाकों में अपनी दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में तेजी लाई है। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस पर सरहद पार हमलों में भी नुमाया इजाफा हुआ है। अफगानिस्तान में क़दामत पसंद इस्लामी हुकूमत की वापसी ने इस मुल्क में पनाह लेने वाले पाकिस्तानी अस्करियत पसंद गिरोहों की हौसला अफजाई की है। मुतवक्के तौर पर अफगान तालिबान की सहूलतकारी में होने वाले नाम निहाद अमन मुज़ाकरात नाकाम हो चुके हैं। TTP ने हथियार डालने से इनकार कर दिया। इसके बजाय इस ग्रुप ने अपनी शराइत पेश की थी, जो अमली तौर पर साबिक कबायली इलाकों पर पाकिस्तान के कंट्रोल को हथियार डालने का मुतालबा करती है। ये बात वाज़ेह है कि अफगान तालिबान इंतज़ामिया पाकिस्तान पर दबाव डालने के लिए TTP को इस्तेमाल करना चाहती है। इसके अलावा ये भी वाज़ेह है कि TTP के कुछ धड़े बैन अल-अक़वामी अस्करियत पसंद ग्रुप का हिस्सा हैं, जिनकी इब्तिदा मशरिक़ वस्ता में हुई है। दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। ऐसा लगता है कि तालिबान हुक्काम जानबूझकर दौलत इस्लामिया पर तवज्जो मरकूज़ करना चाहते हैं और TTP को बचाना चाहते हैं, जिसे इंतज़ामिया की हिमायत हासिल है।
ये सच हो सकता है कि तालिबान दौलत इस्लामिया के खिलाफ लड़ने के लिए संजीदा हैं, लेकिन वो टीटीपी और IL-फास्की के दरमियान करीबी ताल्लुक को तस्लीम करने से इनकार करते हैं। ये बात सब जानते हैं कि दाइश के बहुत से जंगजू टीटीपी की सफ़ों से आए हैं। इसके अलावा अफगानिस्तान में पनाह रखने वाले कुछ दीगर गैर मुल्की अस्करियत पसंद ग्रोहों जैसे इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान (IMU) ने दाइश के बैनर तले इत्तेहाद कायम किए हैं। ये बात सब जानते हैं कि अफगानिस्तान में दौलत इस्लामिया का पहला सरबराह हाफिज सईद टीटीपी का साबिक कमांडर था, जो अस्करियत पसंदों को फौजी ऑपरेशन के जरिए साबिक कबायली इलाकों से बेदखल किए जाने के बाद अफगानिस्तान भाग गया था। पाकिस्तानी अस्करियत पसंद ग्रुप ने 2015 में अफगानिस्तान में मंजर आम पर आने के बाद दाइश का मरकज तश्कील दिया था। ये ग्रुप ज्यादातर मशरकी अफगानिस्तान में काम कर रहा है, जहां टीटीपी ने पनाह ली हुई है। शुमाली वजीरिस्तान से निकाले जाने के बाद IMU के जंगजू दाइश की कार्रवाइयों को वसअत देते हुए शुमाली अफगानिस्तान चले गए, जिससे हमसाया मुल्क ईरान और वस्ती एशियाई रियासतों को भी शदीद तशवीश लाहिक हो गई। IL-फास्की के उभरने ने अफगान तालिबान के लिए एक अहम चैलेंज पेश किया, जो इस वक्त अमेरिका की ज़ेर क़यादत अफवाज से लड़ रहे थे। उनकी सफ़ों से दौलत इस्लामिया में कोई बड़ा इन्हिराफ नहीं हुआ था, लेकिन बैन अल-अक़वामी अस्करियत पसंद ग्रुप के वजूद ने अफगान तालिबान के कंट्रोल को खतरे में डाल दिया था। दिलचस्प बात यह है कि तालिबान की हुकूमत की वापसी के बाद दाइश के दहशतगर्द हमलों में नुमायां इजाफा हुआ है। एक सरकारी अमरीकी रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता साल अगस्त के बाद से दाइश के जंगजुओं की सफ़ों में तेज़ी से इजाफा हुआ है, जिसके बाद जंगजुओं की तादाद 4000 तक पहुंच गई है। दाइश के ज़्यादातर हमलों में अक़लियती शिया बरादरी को निशाना बनाया गया है। बैन अल-अक़वामी अस्करियत पसंद गिरोहों और गैर मुल्की जंगजुओं की मुल्क में जगह हासिल करने की बढ़ती हुई ताकत न सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि पड़ोसी ममालिक, ख़ास तौर पर पाकिस्तान के लिए भी सलामती के लिए संगीन खतरा है। दहशतगर्द नेटवर्क्स के दोबारा उभरने की एक बड़ी वजह अफगान तालिबान के टीटीपी और IMU जैसे गैर मुल्की अस्करियत पसंद गिरोहों के साथ नज़रियाती रवाबित हैं। बैन अल-अक़वामी दहशतगर्द तंजीमों के साथ उनके ताल्लुकात वाज़े हैं। अफगान तालिबान की जानिब से आलमी दहशतगर्दों की हिमायत बैन अल-अक़वामी बरादरी के साथ उनके इस अज़्म पर शुकूक व शुबहात को जन्म देती है कि वो किसी भी दहशतगर्द गिरोह को अपनी सरगर्मियों के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक दहशतगर्द गिरोहों को हालिया तारीख में किसी भी वक्त के मुकाबले में अफगानिस्तान में ज़्यादा आज़ादी हासिल है। टीटीपी यकीनी तौर पर उनमें सबसे ज़्यादा मुहलिक है, जिसके अल-कायदा और IS के से करीबी ताल्लुकात हैं। दरियासना पाकिस्तानी सफारत खाने पर ताज़ा तरीन हमले ने अफगानिस्तान से पैदा होने वाले दहशतगर्दी के खतरे को एक नया और ख़तरनाक मोड़ दिया है। इस तरह के वाक़यात इस्लामाबाद और काबुल के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद कशीदा कर सकते हैं। सरहद पार हमलों के बढ़ते हुए वाक़यात और अफगान तालिबान इंतज़ामिया की जानिब से टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई से इनकार ने पहले ही दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मुतासिर किया है। दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तानी सफारत खाने पर फायरिंग का वाक़या पाकिस्तान की वज़ीर ममलकत बराए उमूर ख़ारजा हिना रब्बानी घर के दौरा काबुल के चंद रोज़ बाद पेश आया। दोनों ममालिक के दरमियान चंद माह के दौरान ये पहला सरकारी सतह का राब्ता था। दीगर उमूर के अलावा तालिबान इंतज़ामिया की जानिब से अफगान सरजमीन से सरगर्म टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई करने में नाकामी को भी दोनों फरीक़ैन के दरमियान मुलाकातों में उठाया गया है। सिफारत खाने पर जुर्रतमंदाना हमले ने पहले से ही खतरनाक माहौल को मज़ीद ख़राब कर दिया है, जिससे काबुल और दीगर अफगान शहरों में मुकीम पाकिस्तानी ओहदेदारों की जिंदगियां खतरे में पड़ गई हैं। ये ज़रूरी है कि अफगान तालिबान टीटीपी और दीगर बैन अल-अक़वामी अस्करियत पसंद नेटवर्क्स के साथ तमाम ताल्लुकात मुनक़ते कर दें अगर वो बैन अल-अक़वामी बरादरी के साथ अपने वादों को पूरा करने में मुखलिस हैं। मज़मून निगार एक मुसन्निफ़ और सहाफ़ी हैं। डान अखबार में शाये शुदा 7 दिसंबर 2022। For more videos, subscribe our channel. Dawn Vocabulary with Urdu meaning. Like, subscribe, share and comments.